Um, Everyone else, all the listeners, welcome to Chinet, where we spill tea on AI technology before the machines take over. And as you know, I'm your host. And today we're diving deep into the world of social media infrastructure with someone who's seen it all. That's Chirag Bansal for you. And when I say he's seen all of social media, I mean he's been building systems that power it for almost a decade. He's the AVP of product engineering at Sprinklr, where his team processes billions, yes, billions of social media posts every single day. Chirag has grown from a product engineer to AVP at the same company. That's like watching someone go from writing code to making multi-million dollar technical decisions, all while the social media landscape has practically exploded all around us. Today, Chirag is building AI systems that can detect fake influencers, prevent brand crisis in real time, and make sense of all the chaos that is social media for brands. They also manage voice calls for hundreds of brands, and there's a high possibility that you've already interacted with some Sprinkler system either on voice or on social media without actually even knowing about it. And if you've ever wondered how your angry tweet gets flagged by brands and how do they reply to that in minutes, or how companies manage voice support, or what it takes to build software that handles the entire world's social media chatter, you're in for a treat today. So, Chirag, once again, welcome to China, and let's start. Thanks, Uh, Chirag. Yeah. Great. So I'll start with your first question. So basically, what we've seen or what we've read is that Sprinkler handles billions of posts every day, right? Which is like processing every tweet, every Instagram story, every Facebook post from multiple brands from multiple countries, right? So it, Sprinkler इतना ज़्यादा डेटा हैंडल करता है, बट बैकएंड पे क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल अब लेट्स से किसी ने पोस्ट करा, राइट, आपके क्लाइंट के ब्रांड के बारे में रात में 3 बजे, आप तो सब ऑफ कोर्स सो रहे होगे, तो सिस्टम आपका कितनी जल्दी कैच करता है एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट आफ्टर समवन ट्वीट्स अबाउट और लेट्स से पोस्ट अबाउट वन ऑफ योर क्लाइंट्स? So, hi everyone. So, basically, the intent of the entire social media is latency. How fast can we bring messages into the Sprinkler? Because Sprinkler works for like Sprinkler is being employed by like Fortune 500 companies, and they have set SLAs to respond to a customer. So, what at a very high level, what is the journey is? एक एंग्री कस्टमर या एक हैप्पी कस्टमर ने ट्वीट किया जाके कि हेलो नाइकी आई लाइक योर शू, ठीक है. सो विद इन सेकेंड्स दैट ट्वीट हैज टू कम इनटू स्प्रिंकलर बीइंग एनरिच्ड बाय मल्टीपल एआई मॉडल्स, जिसके अंदर हम उसका इंटेंट निकाल रहे हैं, वो सेंटिमेंट निकाल रहे हैं, उसका वो कंप्लेन है उसको बाइफिकेशन कर रहे हैं. उसके बाद बेस्ड ऑन दोज एंड टैगिंग इट हैज टू गो थ्रू द कस्टमर्स वर्क फ्लो. इफ इट नीड्स ट्रांसलेशन, उसका कौन सा एजेंट अवेलेबल है कि नहीं है, एंड शुड इट बी एंगेज्ड बाय अ क्लाइंट और नॉट. If it has to be engaged, should it be an automated engagement or should it be a manual client का agent जाके उस पर reply करेगा. So all these decisions are to be made as fast as possible. And when I say fast, I don't mean in minutes. It has to be done in seconds because customer का otherwise SL will get heavily impacted. राइट. And this is to be done for billions of messages across multiple channels while ensuring fallbacks कि अगर एक मीडियम से we were not able to fetch messages तो किसी दूसरे मीडियम पे जाएंगे हम fetch करने. By medium I mean like for the same social network. So there has to be like rollback mechanisms to like it cannot fail. Social media सही engagement cannot fail at any given point of time. सही तो बात है, कोई आगे वैसे आ रहता गया है. और उसने कुछ ट्वीट कर दिया और अगर 10-20 मिनट भी रिप्लाई नहीं हुआ तो वो वायरल हो जाती है वो चीज. वायरल हो जाएगा इतनी देर में, एंड देन अ सिंगल वायरल ट्वीट कैन ब्रिंग एन एंटायर कंपनी डाउन. ये सबको पता है. तो क्रेजी. इसलिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है लेटेंसी को फिक्स करना यहाँ पे. Right, right. These are very, very critical systems, which वेरी they're all बट यस. behind because आपको नहीं पता चलेगा, right? As a customer, आप ट्वीट कर रहे हो, वो रिप्लाई कर रहा है. अब पीछे इतना सब कुछ चल रहा है. इसका कुछ हो रहा है ये किसी को नहीं पता अभी, क्योंकि एक एंग्री कस्टमर को रिप्लाई करना एक हो सकता है एक कस्टमर के लिए इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिप्लाइंग टू अ हैप्पी कस्टमर. इट माइट नॉट ऑलवेज बी दैट केस. हो सकता है हैप्पी कस्टमर के इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ा, उसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपको उसको ज्यादा रिप्लाई करना पड़ेगा. तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग कि पहले हम किसको रिप्लाई कर रहे हैं, अगर हम रिप्लाई कर रहे हैं तो. Right, right. Very interesting, very interesting. या तो ये तो स्प्रिंकलर हो गया. अब थोड़ा सा आपकी जर्नी एंड आपकी प्रोफाइल पे आते हैं. तो बेसिकली व्हाट you started as a product engineer in Sprinkler and then you moved to an AVP position. And that's
आई थिंक शिफ्ट राइट फ्रॉम राइटिंग कोड टू एक्चुअली लीडिंग बिग टीम्स. तो अब आप क्या, जैसे अब हमारे लिसनर्स हैं वो अभी लेट्स से फर्स्ट ईयर ऑफ द जॉब में, सेकंड ईयर ऑफ द जॉब में, तो वो तो सब कोड कर रहे हैं. बट एज एन एवीपी अब आप क्या करते हो? डू यू स्टिल कोड और आर यू नाउ द पर्सन हु डिसाइड्स कि क्या कोड होता है, राइट? हाँ, कि क्या कोड होना है, या आर्किटेक्चर बिल्ड करते हो? एंड as a how do you actually navigate the transition from being a developer to being actually like a leader of such a big team? Yeah, so it definitely has been a journey from writing code to now shaping what actually gets built. I still get involved technically. कोड रिव्यूज हो गए, आपके आर्किटेक्चर डिसीजंस हो गए, एंड रोलिंग अप स्लीव्स की जब एक्चुअली कोई क्रिटिकल फीचर हमको शिप करना है तो. बट मोस्ट ऑफ माई एनर्जी नाउ डेज गोज इन टू इनेबलिंग माई टीम, लाइक चूजिंग द राइट प्रॉब्लम फॉर अ राइट पर्सन विद द राइट कंटेक्स्ट. So that shift has gradually been from being a builder to being an enabler. I have to have a ecosystem wherein my team actually feels कि they are able to like उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एंड आई हैव टू बीइंग एन इनेबलर फॉर देम. उनको लर्निंग भी उनकी इंप्रूव करनी है, उनको हेल्प भी करना है, रोड ब्लॉक्स रिमूव करने हैं उनको. एनी ऑफ देयर एनी एंड एवरी प्रॉब्लम आई शुड बी द वन सॉल्विंग देम, ऐसा. सो यस, द शिफ्ट हैज बीन वेरी ग्रेजुअल. फ्रॉम पहले हम बिल्ड करते, बिल्डिंग इज वेरी इजी ऑनेस्टली आई फील, बट किसी और से बिल्ड करवाना इज लाइक टफ टफ टास्क. Right, right. तो आप बोलो कि आपका your profile is basically to help everyone else in the team and make sure that their issues are resolved. So ideally you're राइट सेट ऑफ leading. प्रॉब्लम विद राइट सेट ऑफ पीपल, मैचिंग देम. एंड कभी कुछ बहुत क्रिटिकल आ गया, लाइक विच हैज टू बी डिलीवर्ड एट 3 AM नाइट, तो उसमें तो फिर बिल्डर रोल भी आ जाता है आपका. हाँ, फिर तो तो ये करना ही है. फिर तो करना ही है. यस. या सो अब जैसे स्प्रिंकलर एआई है, राइट? मतलब इतना सब कुछ हैंडल करिए, कस्टमर कन्वर्सेशंस, वॉइस में कितना कुछ कर रहे हो, तो अब एक एक बड़ा मतलब ना क्वेश्चन आता है कि अब रिसेप्शनिस्ट इतने सारे वैसे तो वैसे भी आ गए हैं, एंड ऑफ कोर्स स्प्रिंकलर का तो इज वन ऑफ द बेस्ट. बट लेट्स से इन 5 years, अगर let's say your mom calls a customer support for some big company, right, which has a sprinkler platform, will she even know that she's actually talking to an AI and not and not a real person? But उससे ज़्यादा important कि if they're talking to an AI, does this need to be declared? Need to be, yeah, मतलब ethically, morally, like is it if let's say they don't get to know, then morally is the company responsible to tell the people कि हाँ, you're talking to an AI and not a person? ओके, सो ग्रेट क्वेश्चन. आई फील अगर हम लोग एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब करेक्टली, एंड व्हेन माय मॉम कॉल्स अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, लेट्स से 5 year डाउन द लेन, शी शुड फील अंडरस्टूड एंड हेल्प्ड. वो मैटर करता है वेदर इट इज डूइंग एआई पीछे बैक एंड पे है या ह्यूमन एजेंट है, इट डज नॉट रियली मैटर. And honestly, knowing my mom, agar if she knows ki AI is able to provide her better answer at a very like quickly, rather than waiting 20 minutes on hold for an agent, she would definitely prefer bot. कि बॉट आंसर करे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुए, rather than waiting for 20 minutes, जबकि वो आंसर अच्छा भी दे रहा है. Right. एंड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि वो, आई फील ट्रांसपेरेंसी इज द की. कस्टमर शुड नो who or what are they talking to. See, trust is very important, and trust is not built when you say कि आपने ये problem कितनी जल्दी solve कर दी, but it is built when you are how open about your process. So companies should disclose when they are moving a conversation to an AI, but it should be done in a such a manner that should feel human, and it should not be very dismissive. So the goal of AI is to be natural, feel natural and empathetic. अगर वो dismissive हुई तो like we are failing. And let's say at the end of the day, if we feel like this was the best support that we had and we were not even aware if it was AI, Right. then we have achieved what we wanted to achieve. Yeah, so that was main Right, right. solution. No, that But yes, I feel that custom client should inform to customers that they are now being handled by AI. by AI, right, exactly. अभी तो ऑनेस्टली अभी तो थोड़ा पता चल जाता है, बट आई थिंक धीरे धीरे इतना बट ज़्यादा अभी वो इवॉल्व. डिसमिसिव वे होता है वो, मतलब वो हाँ. ऐसा लगता है कि मेरे को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, इसलिए मैं एआई के पास चला, मेरे को यस, डिट्रैक्ट किया यस, है. यस. इट्स नॉट नेचुरल. हाँ, और अभी सब ट्राई वही करते हैं कि किसी तरीके से ना एआई को बजट बाईपास करके बाईपास ह्यूमन कर के पास दे, पहुंच बना जाओ. जाए. यस, तो वो एग्जैक्टली. जो गैप है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फिक्स. या, एग्जैक्टली.
वेरी इंटरेस्टिंग. सो आपका जैसे मतलब आपने ये लिखा हुआ था दैट यू एक्चुअली लेड द आर्किटेक्चर शिफ्ट फ्रॉम अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन टू अ माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन while doing while handling all of this data, billions of posts, इतने सारे data points. तो अब हम अपना like if I talk about airlift, we're processing much lesser data, but to make that shift, to even make like small changes, it's very difficult to do it without downtime, and like we still have like times when there are like 4 5 minutes of downtime. Now of course in your case it's not possible, right? So doing the shift is like almost like a surgery on a moving airplane, right? And thankfully that airplane might not be the ones which are falling down. Very sad, not to joke about, but still, how do you actually migrate without actually breaking down the whole business? So it's not about doing a surgery on an airplane, it's about doing an open heart surgery on an airplane. It's Yeah. very critical. But the key is, I feel, is not to treat it as a rewriting of the entire solar system. आपको यू शुड नॉट बी लाइक मेरे को पूरी दुनिया ही आज रीराइट कर देनी है. The approach that we followed was to first and foremost was to identify the most painful bottleneck, कि जहाँ पे हमारी सारी सर्विस स्लो हो रही है या जो हमारा एकदम परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन रहा है. सबसे पहले वी ट्राई टू कार्व इट आउट विद अ क्लियर बाउंड्रीज कि भाई तू साइड में आ. वंस दैट वाज डन वी न्यू कि हमारे 50% ऑफ द बैटल वाज वन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज टू हैव प्रॉपर ट्रैकिंग अराउंड दिस carved out service. Got it. देयर थिंग्स विल ब्रेक डाउन, वो सबको पता है, ठीक है. बट द एम इज टू एंश्योर कि थिंग्स ब्रेक डाउन साइलेंटली, कस्टमर को नहीं पता चलना चाहिए. वी शुड हैव प्रॉपर रोल बैक मैकेनिज्म इन प्लेस. वी शुड हैव लाइक ट्रैकिंग, एंटायर ट्रैकिंग, कस्टमर से पहले हमको पता चले. एंड सेकंड, इट शुड बी बैकवर्ड कंपैटिबल. एंड लाइक इफ आई टेल यू, लाइक स्प्रिंकलर के केस में इट एक्चुअली ब्रोक डाउन, बट इट ब्रोक डाउन साइलेंटली. And that was where we were able to immediately roll back, and like client was not even impacted. And what I feel is moving from monolith to microservice, it's not just a tech shift. You have to Yeah. define proper SLA, service owners. You are actually growing as an organization, and along with growing technically. So yeah, having an entire bigger picture in place is very important, and we should not be afraid and think of it as writing as an rewriting the entire solar system. So that is the main. उसको pieces में तोड़ो, divide and conquer ऐसा बोलो. राइट, राइट. तो एक छोटा सा कोड बेस उठा के पहले एक माइक्रो सर्विस बनाओ, एंड Yes. इट्स नॉट जस्ट टेक, देन यू नीड टू हैव एक ओनर होना चाहिए कि अच्छा ये माइक्रो सर्विस का कौन ओनर होएगा, एंड देन SLAs क्या होंगे, because now you have entire other system is dependent on your service. तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फिर यहाँ पे अब. exactly, that's very important. And this is a very interesting point of view कि it is not just technology which is changing, it is the whole organizational structure which is then also changing along with the technology. You are evolving, company is evolving, everyone is evolving with this. Right. So देखिए अब what we've been discussing is, we want to discuss is AI, and what, how is it impacting our day to day life, right? Day to day life मतलब for of course us techies. So see, as a developer I know मतलब चलो cursor use करोगे, copilot, all of these, you use all of these tools. As a tech leader, and this has been, if you go to any recent report, right, today, I also posted about it, that even the McKinsey report said that the problem with AI today is that the leaders are unable to adopt, right? So it is not the actual developers or actual people on the ground, they want to adopt into AI, but there's problem with training, with psychology, with how to trust systems. So as a tech leader, how do you actually integrate AI tools into your team's workflow कि मतलब सबको implement भी करना है, but it needs to be done in the best way possible. So how do you do that? So for developers, I feel AI is a tool that we didn't know we needed, but now we cannot live without it. ठीक है? And we at Sprinkler are heavily using AI to enhance our developer productivity. So right from the inception of an idea, wherein you are writing a PRD, ठीक है, to the end when the feature gets shipped, हर stage के ऊपर we are using AI.
ठीक है. So what that means is all repetitive stuff like writing boilerplate code, writing your documentation, helping you generate SQL queries, helping you generate your test cases, edge cases. Everything is AI powered. If not entirely AI owned, it is AI powered to some extent. ठीक है. So we have used, it's like pair programming with AI. आप पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हो वेर इन योर वन पार्ट ऑफ योर पेयर इज नेवर गेट्स टायर्ड. वो आपके लिए हमेशा आपके पास है. ठीक है. अब इसको, बट द मेन fundamental thing that we should always remember is AI is a tool to give you first draft. You should not take its output as it is and use it in production. अगर आप वो कर रहे हो then that is like bound to fail. तो AI को यूज करो टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी इन CI/CD वर्कफ्लोज, इवन इन कोड रिव्यूज टूल. उसमें भी वी आर यूजिंग इट एंटायरली. बट it should Wow. not be output of that should be completely vetted, at least from seniors as well as junior. Right, right. That तो is हम लोग entire. के साथ क्या होता है ना, जैसे मैं आप यही रेज कर रहे हो क्वेश्चन, तो व्हाट वी हैव फेस्ड इन आर कंपनी इज दैट a lot of times आप जैसे कोई पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर ली, कोई फीचर मर्ज कर लिया, फिर जब उसमें बग आया और जब वो बग सॉल्व करने जाए, तो जिसने भी लिखा है वो बोल देते हैं कि यार ये तो हमने लिखा ही नहीं था, ये तो कर्सर ने लिखा था. So people claim that AI actually is making 10x developers, or there's a McKinsey report again which I posted about that. It makes developers 40% more productive. But do you think that they're actually shipping features which are fast, and fast, which are fast and also shipping features faster, right? And or it is just कि मतलब पुश हो गया एंड फीचर चला गया, लेकिन लेकिन इवेंचुअली इट विल, यू विल नीड अ ह्यूमन और अ सीनियर पर्सन टू debug and then fix those issues. तो AI इज ग्रेट एट स्पीडिंग अप थिंग्स. ठीक है. वो बॉयलर पेड आपका कोड लिख देगा, आपकी सारी समरी डॉग लिख देगा, सब लिख देगा. बट शिपिंग बेटर फीचर फास्टर, दैट रियली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट क्लैरिटी. आपका फीडबैक लूप कैसा है, वो सब चीजें, एंड ह्यूमन जजमेंट तो डेफिनेटली यू कैन नॉट बाईपास दैट. वो तो चाहिए ही चाहिए. तो AI विल हेल्प यू रिड्यूस टाइम ऑन योर ग्रंट वर्क, जो भी आप रेपिटेटिव काम करते हो. But debugging, edge cases, system design, that all need strong engineering like skills, and you cannot bypass them. तो वो तो चाहिए ही चाहिए. And value is not in writing more code. So value is freeing up your dev bandwidth, ताकि वो लोग एक्चुअली वहां पे फोकस करें जहां पे कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, इन सिस्टम डिजाइनिंग, इन स्केलिंग अप थिंग्स. तो यूज AI एज अ पार्टनर, not as a replacement to a developer. Then you'll have a balance of both. Yeah. राइट, राइट. बट आपने बोला जैसे कोड रिव्यू में भी आप एआई यूज करते हो, और आर्किटेक्चर सही होना चाहिए, एंड यू नीड दैट ह्यूमन इंटरफेस. बट कैन यू एक्चुअली, एक तो अच्छा आप कोड रिव्यू करते कैसे हो, लाइक हाउ डू यू, व्हाट एआई, लाइक हाउ डू यू एक्चुअली डू दीज कोड रिव्यूज? बट व्हेन यू रिव्यूइंग, व्हाट आर यू रिव्यूइंग the architecture built by humans, or are you reviewing the architecture or the logic whatever built by the AI? And if you're, मतलब डिफरेंस भी पता चलता है क्या, मतलब आप बताओगे भी कैसे, लाइक इन योर कोड रिव्यू हाउ डू यू इवन make a like understand that what's written by AI, what's written by humans? So basically, a reviewer is reviewing both human as well as AI logic. अब interesting part is कि AI will help you make your code look clean. सिंटेक्स क्लियर कर देगा वो आपके, ये सब चीजें पकड़ लेगा. बट आपके जो एज केसेस हो सकते हैं आपका, या बिजनेस लॉजिक हो सकता है, या आपके जो आर्किटेक्चरल पैटर्न हो सकते हैं, वो अभी भी मिस हो सकते हैं. सो अब व्हाट वी डू इन स्प्रिंकलर इज एवरी AI जनरेटेड कोड इज एनोटेटेड. ठीक है. वी यूज एनोटेशन हेवीली, तो उसमें हर किसी के ऊपर एनोटेशन होगी कि दिस इज एन AI जनरेटेड कोड. What that helps is for a reviewer, I know I am reviewing a PR, I know कि there is a AI generated code. It acts as a trial for me कि भाई अब ये AI वाला और ये मैनुअल वाला है, तो मेरे को AI के लिए मेरे को पता है मेरे को क्या चीजें टेस्ट करनी होती है. बिकॉज अदर बट मेरे पास वो नहीं है. इफ आई डोंट हैव अ डिफरेंशिएशन इन माई कोड कि वो AI है या मैनुअल है, इट्स लाइक रिव्यूइंग अ PR ऑफ एनी इंटर्न, ओवर कॉन्फिडेंट इंटर्न, कि उसने कुछ भी लिख के Right. दे दिया मेरे को, उसको भी हाँ, नहीं पता कि उसने क्या लिखा. ठीक है. सो with the adoption of AI, I feel like it has raised bar for the reviewers. Reviewing, it's not just about कि कोड क्या कर रहा है, it's also understanding कि ये जो कोड लिखा है, it is
डज इट एक्चुअली मेक एनी सेंस? पता चला वो कुछ भी लिख के हमने, द सेम पॉइंट विच आई वाज मेकिंग अर्लियर कि यू हैव टू वेट द आउटपुट ऑफ द एआई. इट्स नॉट दैट कि आपने कॉपी किया, यहाँ डाल दिया एंड देन रिव्यूअर इज रिव्यूइंग एवरीथिंग. So annotation can be a very good mechanism wherein you differentiate between AI generated as well as manual code. True, true. That's a very nice strategy, and I think I will also employ that. That अगर AI generator है, तो at least annotate करके करो. But this the developer only must be annotating it, right? Like they only No. must be doing the So annotations, we or have is it internal a tools workflow? as well. Yeah, we have internal tools when like we have a plugin wherein when you click on that it generates, it will automatically add at the rate annotated. और डेवलपर के पास ऑप्शन है ही कि वो तो कर ही Yeah. सकता है, बट मिस ना हो इसलिए जब भी आप वहां से करते हो वो अपने आप कर देता है उसको. राइट, राइट. Yeah. नहीं, सही बात है. बट देखिए, एआई अब डेवलपर्स यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एंड ये दोनों चीजें हम लोग को ही हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है सबको ही होती होंगी कि देर आर सम फियर्स विद एआई टूल्स, राइट? एक तो ऑफ कोर्स हमारे बेसिक जो सबको होते हैं कि मतलब कोड जो जा रहा है वो ठीक जा रहा है या नहीं, रैंडम, वही एक ओवर कॉन्फिडेंट इंटर्न तो नहीं लिख रहा कोड हमारा, वो दैट इज ऑल देयर. बट देयर इज टू थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग को जो होता है कि आइदर इफ वी use AI and if we force everyone कि नहीं कर्सर से ही लिखना है या कोपायलट यूज करना है, then the devs become too dependent, then the devs might become too dependent on AI and then eventually might not end up actually thinking for themselves. They become, जिसको आजकल बोलते हैं GPT whisperers, तो वो ऐसा कुछ बन जाए. या और अगर हम बोले कि नहीं खुद लिखो कोड, तो the competitors might like outpace us in terms of the speed and the features they're pushing. So so what are your honest fears and what do you think about these two of mine? I think both of these are correct fears. If on one hand my team become over dependent on AI without understanding the technical depth of the solution, तो वो great engineers बन ही नहीं सकते. So basically you cannot debug what you don't understand. ठीक है, आपने Right. as it is copy कर लिया and AI will not come and rescue you at 3 a.m. production outage. ये तो अपन क्लियर ही है. बट ऑन दी अदर साइड अगर हम एआई को स्लो अडॉप्ट करेंगे तो भी गलत है कि कॉम्पिटिटर्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि स्पीड में हम लैग करेंगे बट इट्स ऑल्सो ऑन द इनोवेशन. तो the real fear I Right. feel is not that AI will replace humans or people, but the teams who know how to use it well and ship more innovative product in a faster as well as with fewer resources will win. तो my job Hmm. is to strike a balance between the both. तो उसके लिए what we do, one thing is to like for the first part wherein you are removing the dependence on the AI is जब भी आप कोई कोड को annotation यूज करते हैं हम लोग, we also enforce कि जिस डेवलपर ने AI जनरेटेड कोड यूज किया है वो अपने पीआर के कमेंट में वहां पे डाले कि why was what was his initial thought process and why did he choose AI generated code over his code. So what that helps is it critical thinking आपकी रहती है उसमें, एंड दे आर ऑल्सो एबल टू लाइक क्वेश्चन देमसेल्फ कि भाई ये मेरा वाला अच्छा था या एआई वाला सोल्यूशन अच्छा था, क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी फिर आपको वैसे ही बहुत इशू हो जाएंगे इसके अंदर. तो Absolutely, वैसे that's balance one करना hundred चाहिए. percent correct. That's a very good strategy, honestly, to kind of get a balance between both. But या चलिए, तो थोड़े वो हो गए जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं या क्या. अब जो न्यू हायर्स या जो फ्रेशर्स आ रहे हैं कंपनी में, एंड जो मतलब द पीपल हु नाउ कमिंग इन, what do you think, what has been your feedback about them? Are the new generation becoming like vibe coders and AI prompters, or is that just a fallacy? आई नो अभी तो नहीं बन रहे, ठीक है, बट द क्यूरियस, बट ऑन द अदर साइड आई सी दे आर द मोर क्यूरियस जितना बंदा है कोई, द लर्निंग ग्रैस्प जो उसकी ज्यादा हो गई ना, विच इज लाइक फिनोमिनल. सो दे आर एबल टू रिवर्स इंजीनियर द सॉल्यूशंस दैट वी सजेस्ट देम. So if AI is used in a correct manner, so there is no alternative for that. Like if you can reason, like why is more important than how. So you need to Yeah, think on why this solution is there, and then right. if you think on the critical thinking, you are doing good. But yes, to answer the question, Mm. अभी वो लोग AI prompters या फिर वो चैट जीपीटी वाले वो नहीं बन रहे हैं. On the other hand, Mm. they are learning and the learning pace has increased as what it was compared to 3 to 4 years behind.
back. Amazing, amazing. So Yeah. that's pretty cool, and that also gives us some hope on the on the developers who are now coming in. Yeah. Now tell me something about the industry in general. मतलब earlier when we started, right, social media, हम लोग तो ऑर्कुट के ज़माने से देख रहे हैं सोशल मीडिया को, right? And then of course, और उससे पहले एक प्लेटफॉर्म होता था हाई फाइव, I remember, which when we were in school. Hmm. So you have seen, but we have been seeing it like after a certain point we've been seeing it from a consumer end. You have actually been breathing and living social media. So it has, first it was just posting, then it was more about commerce, right, and AI. So where is this technology heading up next? Kya hai, matlab, what is next in the social media game? I think next is completely autonomous experiences. So abhi we have AI agent who are interacting on behalf of brand. We have influencers generating AI content. We have Right. commerce. We didn't even know, and commerce has seamlessly been integrated into our conversations. हमें पता Exactly. भी नहीं चला कि ये हो गया. So Hmm. what I feel is, and जो आपका जो difference है between a support, commerce, messaging, customers, ये सब आपका converge हो रहा है. So we are Hmm. moving towards a social ecosystem which is powered by AI, backed by data, and is highly customized and conversation based. So Hmm. eventually, I feel interacting with the software will be like interaction between two friends. Like आप converse करोगे आप एक software के साथ due to Hmm. the power of AI. It's Right. not that there will be no manual intervention. It's like simple between two friends are conversing and you're getting your things done. Wo Hmm. is the future of social ecosystem, I believe. Wow. So, is it like people are gonna have AI girlfriends and boyfriends? It might not, but Rachit, please remember we have to put AI to good use, productive usage. Yes, of course. And but yeah, this is a there's this thing I read somewhere that at 20 years down the line, our children will be like that. This is my AI partner, and we'll be like that. Okay, listen, there cannot be any relationship between a human and an AI, and they're gonna be saying that you are very robophobic. True, true. It So is quite a possibility. It can happen. we don't know what our children have in store for us. Yeah, right. Right. So I think we have just a couple of minutes left. So a very important question for our listeners, especially who are now entering the industry, that you have grown from an individual contributor to an AVP. So what are the skills that actually matter at an executive level which you are, and what advice would you want to give to these engineers who are now at and their initial point in their career, and they want to grow to like a executive sort of a position? Okay. So the biggest shift when you move to a leadership position is realizing that leadership is not about having all the answers. It's about creating an ecosystem wherein people can find their own answers. Wow. Technically, you have to be strong. That is true. That is like aligned. But other than that, there are other skills like communication, trust, empathy. ये बहुत जरूरी हो जाते हैं. So Hmm. I read a quote somewhere like we follow in Sprinkler as well. Like people never forget how you made them feel. Hmm. Yeah, and people will go to great extent extra mile for leaders who listen rather than for the leaders who just lead. So you have to be very open and you have to foster a learning environment. Your team should grow, you should grow, because success of a leader depends entirely on the success of the team. अगर True, true. टीम नहीं ग्रो करी तो लीडर होना ना होना क्या ही फायदा करता है फिर तो उस बात Yes, को. So absolutely. building trust is something I feel is the most important part. And on the overall, if you take my advice for a person moving from like starting to a leadership position, is stay curious, like communicate clearly, look at a bigger picture, and like be very open with your communications. Transparency is the key. Right, right, ये right. सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं along with technical skills of course. Yeah, technical skills, I think वो तो बेस हो गया, वो तो हाँ, चाहिए ही, and but where these are the things which people don't know, and true. what you're saying that they ये matter a lot. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है व्हेन यू गो टू स्केल टू एन सर्टेन लेवल, क्योंकि वो नहीं है तो फिर कम, अगर आपकी टीम का आप पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप
किसी चीज अच्छे लीडर नहीं नहीं आगे बढ़ पाओगे. Very true, very true. Great, Chirag. Thank you so much for this very eye-opening half an hour. And No, it was I think lovely, Rachit, and we should definitely do it again. It yes, was very nice talking to you. same here, man. Same here. And yeah, I think the insights we've got here are very very important, and I think they also represent a lot of the things which are now going to happen and for which we need to prepare now, because I think the AI tornado, let's not call it an apocalypse, but the tornado is about to hit us. And Yes, and if it's we're not, real. It is real. it is real, yes. And if we're not ready, then and it's for all positions, right? Be it Yes, a leadership role, be it a software developer, be it a yes. content, even like a content writer or a junior or an intern. But yeah, And we should look at AI as a partner and not as a replacement of us. Like it mm, won't replace it, but it has to be a partner. a Both partner, ways will yeah. be. मना ये नहीं कर सकते कि यार नहीं अब एआई हम तो ऐसे ही करेंगे पुराने रूप वो से नहीं है. You have करेंगे. to scale up. Exactly, exactly. Yeah. Great, thank you so much, Chirag, Oh, and thank thank you you. so much everyone for joining in, and see you guys again with another episode of China. Yeah. Bye Thank bye. you. Bye.